Welcome back to the channel of Chem Pacific. In this video, I'm going to discuss with you the structure of dimeric copper acetate. In my previous video, I already discussed with you about the Rhenium chloride structure and how the delta bond is formed over there. Now, we are going to discuss about the formation of delta bond in another complex, that is the dimeric copper acetate, in this video. Before we get started, if you're new to our channel, don't forget to subscribe our channel and press the bell icon. And also, if you like your video, do press the like button. Now, let's get started. Now, see students, I always tell you that chemistry is an experimental study. Whatever the observations are made, the theories and postulates are made accordingly. First of all, that is why, it is very important for us to understand what are the observations. In this complex, it has been found that there are two new observation. One is that the copper जो distance है ये enough short है, ठीक है, and next है there is partial quenching of the magnetic moment. So magnetic moment जितना expected किए गए थे उतना नहीं है, and this is the partial quenching of the magnetic moment, and the value is 1.43 Bohr magneton. So these are the special two observations. So जितना हम expect कर रहे थे अगर एक bond formation दोनों के बीच, तो उसकी वजह से जितना bond length होना चाहिए था experimental value उससे भी कम है. Why is it so? Now let's study that. Now see students, before we proceed, let us understand the electronic configuration of copper 2 plus. Now copper 2 plus is having electronic configuration of 3d9. Now since you see this is having an arrangement of octahedral, so in the octahedral arrangement this will be distributed into T2G and EG levels, right? And since you are having 9 electrons, you will be having 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी बात है, ये 9 d orbitals जो है इसकी वजह से जो this is your T2G level and this is your EG level. Now EG level is consisting of 2 orbitals. One is dx square minus y square and the other is dz square. ठीक है. Now you see यहाँ पे अगर 3 electrons है, so both of them are degenerate. दोनों ही जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो कहीं पर भी आ सकते हैं, dz square में भी और dx square minus y square में भी. But I already explained you in my earlier videos that अगर ये एक octahedral है, then this is going to be your dx square minus y square orbital, ठीक है, and this is going to be your dz square orbitals. So this is your dz square and this is your dx square minus y square. Now it is clearly visible to us that dx square minus y square is actually pointing 4 ligands and dz square is pointing 2 ligands in an octahedral complex. So that is why you can say that if दो electrons को अगर रहना है, it would prefer to remain in the dz square orbital rather than the dx square minus y square. क्यों? क्योंकि dx square minus y square is pointing how many ligands? It is actually pointing 4 ligands. ठीक है, तो अगर दो और electrons यहाँ पे, it is dx square minus y square, you see it is actually pointing 4 ligands. अगर दो electrons को dx square minus y square में रहेंगे, then obviously it will experiences more repulsion due to the presence of 4 ligands. And repulsion, I already explained you, means destabilizing factor. That is why the two paired electrons prefer to remain in the dz square orbital, because the dz square orbital is consisting of only 2 ligands. तो यहाँ पे repulsion कम होगा. इसीलिए in order to overcome extra repulsion, the two paired electrons, they prefer to remain in the dz square orbital, and that is why this is z out configuration and it is having elongated axial ligands, so elongated axial bonds. ठीक है, so this is the z out.
So mostly copper it has been found it is having Z-out configuration, which is having elongated axial bonds. तो ये तो हमें समझ में आ गया that यहाँ पे dx² minus y² में एक ही unpaired electron है. Now in a very simple form, this copper acetate is in a octahedral geometry where it is getting coordinated with 4 oxygen atoms of this ligand. ठीक है, it is getting coordinated with the 4 oxygen atoms in its equatorial positions, and axial position it is getting coordinated with the water molecule. So about that I have also made a note. See, copper 2 acetate is dimeric in both solid and solution state, and copper 2 is in a square plane and is coordinated with 4 oxygens of the bridging aceto groups. Clear? तो ये हमें समझ में आ गया. और जो axial bond है, the 2 water molecules are attached to each copper 2 plus. And यहाँ पे हमें इसका coordination number भी समझ में आ गया. तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर है that dx² minus y² is containing 1 unpaired electron. ठीक है. Now in this structure, the dx² minus y² orbital contains 1 unpaired electron in the given complex. Now, when this dimeric structure is formed, as you can see, these two copper ions, they're coming enough close to each other, as a result of which ये इन दोनों में जो dx² minus y² में जो unpaired electron है, they tend to pair up. See, this is the schematic representation. I have already done this for you. This is the schematic representation of the formation of the delta bond between 2 copper 2 plus ion in the given complex by the lateral overlap of dx² minus y² orbital. See, so that is why when this copper resulting in the dimeric structure, the 2 electrons in the dx² minus y², they tend to pair up. They tend to pair up. Clear? So, as a result of which, it results in the formation of a new type of bond, which is the delta bond. Which is the delta bond. I hope this is clear to all of you. ठीक है, क्यों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन dx² minus y² में रिसाइड करते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया दैट अगर वो dx² minus y² में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिसाइड करेंगे तो ये ज़्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस नहीं करेंगे क्योंकि dx² minus y² is pointing for ligand and there is a repulsion between the electrons present in the dx² minus x² minus y² orbital and the ligand. So ये कम repulsion experience करेंगे. So in order to provide more stability to the given dimeric structure, the unpaired electron in the copper 2 plus prefers to remain in the dx² minus y² orbital. So when this dimeric copper acetate structure is formed, then what happens? These 2 copper, they come enough close to each other, as a result of which what happens? The unpaired electron, they tend to pair up and resulting in the formation of a new bond, which is the delta bond. As a result of which, this copper-copper bond is enough short than expected, and also there is quenching of the magnetic moment. Otherwise, इसे क्या होना चाहिए था? अगर 2 unpaired electrons होना चाहिए तो magnetic moment काफी ज़्यादा होना चाहिए था. उसके हिसाब से जो magnetic moment होना चाहिए था, experimental value suggest कर रहा है कि यहाँ पे काफी कम हो रहा है. मतलब यहाँ पे pairing of the unpaired electrons which are present in the dx² minus y² is actually taking place. So I hope this is clear to all of you and this is very interesting as well. Now let us now do some problems. Okay? Now the first problem is the calculate the bond order of the given complex. Now let us understand how to solve these problems first of all. Now let us take the example of the first one, that is the molybdenum complex.
सो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा है कि यहाँ पे क्या टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. इफ दिस इज द बैरी सेंटर, द 3 टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, एक सिग्मा, 2 पाई और एक डेल्टा. सिंस सिग्मा बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड सो इट इज मोस्ट स्टेबल. तो ये बैरी सेंटर से जितना नीचे होगा तो सिग्मा स्टार उतना ही ऊपर होगा. नेक्स्ट लाइज द पाई बॉन्डिंग. ये भी बैरी सेंटर से जितना नीचे होगा ये भी उतना ऊपर होगा. And last but not the least is the delta bond, and this is delta to delta star. Now let's see how to calculate the bond order. First of all हमें देखना है कि molybdenum का oxidation state क्या है. So let us consider the oxidation state of molybdenum to be X. Since there are 2 molybdenum atoms, I'm taking it as 2X. So आप देखो यहाँ पे कितना halide है, 8 है, each having oxidation state -1. So overall कितना हो जाएंगे, -4. Therefore 2x is equal to +4. So let it remain like this. तो हमें समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, एक मॉलिब्डेनम का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है. एक मॉलिब्डेनम का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है 6. सो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स. सो 2 मॉलिब्डेनम का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा 6 × 2 विच इज इक्वल टू 12. सो दो जो molybdenum है, it is consisting of 12 valence electrons. Since the oxidation state of per molybdenum is +2, दोनों का +4 है, it means both of them are containing 4 electrons less. ठीक है, वो टोटल मेटल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन लेस हो गया. So this is the structure of 2 molybdenum 2+. तो ये कितना हो गया, ओवरऑल आपको हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सो दिस molybdenum बॉन्ड जो है मेटल बॉन्ड है, दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स. अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसे फिलिंग करेंगे. लेट्स सी हाउ टू फिल दिस. सो वी आर हैविंग टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये है सिग्मा 1 2, देयर डिजेनरेट पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होगा 3 4 5 6 7 8. Now what is the formula of the bond order? The formula of the bond order is number of electrons in the bonding minus antibonding divided by 2. So bond order itself means stability. Higher the bond order, more is the stability. So ये कितना हो गया, total you are having 8. You see antibonding में कोई electrons है ही नहीं. This is equal to 0 divided by 2. So this is equal to 4. So the bond order is 4. Therefore the bond order is equal to 4. Now you can also say that since the bond order is 4, so this complex is also isostructural with the rhenium chloride structure that I already discussed with you in my earlier video. So this is also consisting of delta bond. I hope this is clear to all of you. Now let us discuss about the next example. This is structure number 2. So this is the osmium chloride. तो ये भी हम लोगों ने प्रीवियस जो वीडियो है वहाँ पे डिस्कस किए थे कैसे ऑस्मियम क्लोराइड जो है यहाँ पे डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, और मैंने इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आपको डिफाइन किए थे. अब देखो वो कितना सही मैंने पढ़ा है, ये हम यहाँ से भी प्रूफ कर सकते हैं. ठीक है. सो ये अगेन द एमओ डायग्राम, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज द डेल्टा, एंड देन यू हैव द डेल्टा स्टार, देन यू हैव द पाई, and then you have the sigma star. The highest energy over here is the sigma star antibonding. Clear? Now again हम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑस्मियम का हम x ले रहे हैं. सिंस देयर आर 2 मेटल्स इसलिए हम 2x ले रहे हैं, प्लस देयर आर 8 हैलाइड्स इसलिए 8. Each is having oxidation state -1 is equal to -2. Therefore you have 2x is equal to, will be getting 6. इसका मतलब ये है that osmium जो है, osmium ने total valence electron कितना था, total valence electron एक का है 8. so दोनों जब हो गया 8 into 2, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, is equal to आपका हो जाएंगे 16.
बट अभी हम कर रहे हैं ऑस्मियम इज हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों का 6 है, तो एक का कितना हो गया +3 है ना। सो जो दो ऑस्मियम अगर है टोटल इलेक्ट्रॉन 16 होना चाहिए, बट सिंस ऑस्मियम इज हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 दोनों का +6 हो जाएंगे, मींस द टोटल इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन लेस। तो ये हो गया आपका टोटल 10। I hope this is clear to you. So this osmium bond is total consisting of 10 electrons. Now let us fill the MO diagram. 1 2 3 4 sorry 3 4 5 6 7 8 9 10. Now let us calculate the bond order. So as per formula you have the bond order is equal to number of electrons the bonding minus antibonding divided by 2. So bonding में कितना दिया है, bonding you are having 8 minus 2 divided by 2. So this is equal to 6 by 2 which is equal to 3. Means the osmium they are having 3 metal bond between two osmium metals in this structure. Means यहाँ पे no delta bond formation is there, no delta bond formation. Clear? And that is why, since I already mentioned you that the delta bond formation and the eclipse configuration they are interrelated to each other. Since their bond order is 3, it means there is only 1 sigma and 2 pi bond formation and no delta bond formation. Therefore, also you can conclude that it is having staggered conformation. Staggered configuration. क्लियर। सो ये हमने थ्रू एमओ डायग्राम भी आप लोगों को प्रूफ किया एंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको प्रूफ किया, तो जो सच्चाई होता है वो प्रूफ हो ही जाते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल एंड दैट इज दिस। Clear? Again, you are having two tungstens, so each is having oxidation state X. 2 इसलिए 2x. So OR is having the valency -1. 6 OR है इसलिए मैंने 6 लिया, -1, and overall this is neutral, so this is 0. Therefore 2x is equal to 6. मतलब क्या है, मतलब टंगस्टन जो है तो इसका टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना होना चाहिए था। सो दो टंगस्टन का वैलेंस, एक टंगस्टन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक टंगस्टन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, इज 6। ठीक है। सो यहाँ पे दो मेटल है तो दोनों का 6 × 2 12 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए था। सिंस नाउ ओवर हियर ईच टंगस्टन इज हैविंग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो टोटल दोनों मेटल का टोटल 6 इलेक्ट्रॉन कम है इसलिए +6 आया। सो ओवरऑल हो गया आपका 6। ठीक है। तो अभी हम सिमिलर वे में इसका भी एमओ डायग्राम फिलिंग करके बॉन्ड ऑर्डर कर लेंगे। क्लियर? तो इसका भी फिलिंग, तो टोटल इसका 6 इलेक्ट्रॉन से फटाफट फिलिंग कर देते हैं। 1 2 3 डिजेनरेट इसलिए पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होगा। 3 4 5 6, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएंगे। So number of electrons in the bonding minus antibonding divided by 2. So this is equal to 6 minus 0 by 2 which is equal to 3. So over here the bond order is also 3 and therefore there is no metal bond form, no delta bond formation is taking place in this complex as well, since the number of bond between two metals in this structure is 3. So this is the answer. I hope this is clear to all of you. So this is very important as well. Okay. Now the next problem I have chosen for you is this. Arrange the following complex in decreasing order. So always students remember, it is very important to read the question very carefully. They're asking decreasing order of metal bond length.
तो ठीक है, कभी कभी बहुत टाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस स्टूडेंट्स जो करते हैं वो है वो लोग जानते हैं आंसर को, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड सिंस दे डोंट रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, वो लोग जानते हुए क्वेश्चन को भी गलत करते हैं। तो इसके ऊपर मैं इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ ऑलवेज रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। सो दे हैव गिवन यू 1 2 3 3 complexes, ठीक है। नाउ लेट अस solve one by one. Now let us solve the first one. Point number 1, this complex. Clear? So again the same formula I'm going to use. You are having two metals, ठीक है। एक मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर x है तो दोनों का क्या होगा, दोनों का हो जाएंगे 2x। हैलाइट कितना है, 4 है। each is having oxidation state -1 and this ligand is P. This is obviously a neutral ligand. This is PMe3 या PPH3 या this PMe2PH, all of them are neutral ligands. So 0 into 4, this is equal to 2. So therefore it will come out to be, so 2x if you calculate it will turn out to be 6. Now again, so rhenium जो है, total rhenium जो है it is having 7 electrons, so 2 rhenium होगा, 2 into 7 which is equal to 14. लेकिन हम रेनियम के नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं रेनियम +3। सो दोनों रेनियम मेटल है, सो दो मेटल जो है इसमें टोटल ड्यू टू द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों का टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे एंड ओवरऑल हो जाएंगे 8। सो जब 8 हो जाते हैं, फटाफट हम अभी इसका एमओ डायग्राम कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 and now let us calculate the bond order. Therefore the bond order is going to be 8 minus 0 by 2, this is equal to 4 by 4. ठीक है, now let us move on to the next example, next one, and that is example number 2. So they have given you this Re2Cl4 Me2 pH4, and in this case the overall oxidation state is +1. So similar way we can calculate, and that is each rhenium is having oxidation state of x, so दोनों का 2x plus 4 into -1. You are having 4 ligand, this Me2PH which is a neutral ligand which is equal to 0 and overall is +1. So therefore आपको 2x क्या हो जाएंगे, so 2x आपका हो जाएंगे, if you calculate it will turn out to be 5. सेम एक रेनियम का कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक रेनियम का टोटल होता है आपका 7, सो दो रेनियम का टोटल हो जाएंगे 14, बट हम रेनियम का नहीं कर रहे, हम कर रहे रेनियम क्या है यहाँ पे, सो रेनियम इज हैविंग, दोनों का जो है, दोनों रेनियम इज हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट ओवरऑल 2.5 एक्चुअली। ठीक है, सो 2.5 कैसे लिखेंगे, तो दिस इज 2.5. So overall it is having the two rhenium metals, they are having 5 electrons less, so this is 14 minus 5 which is equal to 9. तो तुरंत हम इसका भी MO diagram कर लेते हैं। तो तुरंत let us write the MO diagram of this. This is the barycenter, you have the sigma bonding, then the pi bonding, then the delta, you have the delta star, pi star and sigma star. Now let us fill them up. So we are having total 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएंगे, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएंगे 8, since you are having 8 electrons in the bonding molecule orbital, -1 divided by 2, so this is 7 by 2 and this is going to be 3.5. Now
the third one. Now the third one, now let us calculate this as well. So you are having Re2Cl4 P Me2PH4, and in this case it is having zero oxidation state. Again we are going to calculate in the same manner. So each rhenium, if you consider the oxidation state of each rhenium to be x, दोनों का 2x हो जाएंगे, तो 4 minus 1 plus 4 into 0 is equal to 0. So therefore 2x will turn out to be plus 4. So total जो है, total rhenium का 2 rhenium प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? सो टोटल का आपका हो जाएंगे, जो न्यूट्रल होता था टोटल, अगर वो रेनियम होता तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स होते, लेकिन ये प्लस 2 है, सो दोनों का 4 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये बन गया 10. नाउ लेट अस क्विकली ड्रॉ द एमओ डायग्राम. So this is your barycenter, this is your sigma bonding, then pi bonding, then delta bonding. You have delta antibonding, pi star antibonding, and last but not the least, it's a sigma star. So you are having total 10 electrons. Let us fill them up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now let us calculate the bond order as well. If a bond order is going to be total कितना है bonding में 8, antibonding में total 2 electrons divided by 2. So this is going to be equal to 6 by 2 and this is going to be equal to 3. ठीक है. Now यहाँ तक सब हो गया है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हमें बहुत अच्छे से अभी जो स्टडी करना है वो है दैट अभी मैं सबका लिख लेती हूँ. मेरा जो आया है स्ट्रक्चर नंबर 1 जो था उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है. नाउ आई एम जस्ट राइटिंग ऑल द बॉन्ड ऑर्डर. तो स्ट्रक्चर नंबर 1 जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर आया था 4, ठीक है. स्ट्रक्चर नंबर 2 उसका बॉन्ड ऑर्डर आया है, आपने देखा है, इट इज 3.5 एंड स्ट्रक्चर नंबर 3 इट इज हैविंग द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 3, ठीक है. नाउ सी, now this is very important. They are asking for the bond length order, ठीक है. So the decreasing order of bond length, I already informed you that bond order means stability. Higher the bond order, so bond order जो है, bond order means stability, is proportional to the stability. अगर बॉन्ड ऑर्डर एंड इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ. तो स्टेबिलिटी कब अटेंड होता है? स्टेबिलिटी तब अटेंड होता है जब बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होता है. बॉन्ड स्ट्रेंथ कब स्ट्रॉन्ग होगा? व्हेन द बॉन्ड लेंथ इज शॉर्ट. इसका मतलब ये समझ में आ गया दैट अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है देन बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएंगे? बॉन्ड लेंथ हो जाएंगे कम. So the 1 is having the maximum bond order. So according to the bond order, you have 1 is having the highest, then 2, then 3. Since bond order is inversely proportional to the bond length, तो सबसे जो कम है bond order वो है 3 का. इसका मतलब क्या है? 3 का जो स्ट्रक्चर नंबर 3 का बॉन्ड ऑर्डर आया है 3 एंड दिस इज द लीस्ट. इट मीन्स द बॉन्ड मेटल बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर 3 इज लॉन्गेस्ट, है ना. इसका सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा. सो द बॉन्ड लेंथ ऑफ 3 इज मैक्सिमम एंड देन उसके बाद कितना आया बॉन्ड? उसके बाद 2 का जो है बॉन्ड ऑर्डर 3.5. तो 3.5 is more than 3. It means it is stronger. The bond length is shorter and the bond strength is stronger than the structure number 3. So इसका हो जाएंगे second position. इसका हो जाएंगे second position.
एंड सी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 1 जो स्ट्रक्चर है इसका क्या है, इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है। मतलब अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, ये मोस्ट स्टेबल है, और क्या हो जाएंगे, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएंगे। सिंस तो इसका भी मेटल मेटल बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट है सो देयरफॉर बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएंगे, शॉर्टेस्ट हो जाएंगे। Clear to all of you? So therefore the bond length of 4 is less. So this is the answer. So answer is 3 greater than 2. The bond length of 1 is, the bond order of 1 is 4. So the bond length of 1 is shortest. So the answer is 3 greater. The bond length is maximum for 3, and then you have 2, and then you have 1. I hope this is clear to all of you, and this is very important as well. So the thing is, like, it is very important for the students to study and to read the question very carefully what they're asking for. If they are asking for bond order, then 1 is having the maximum bond order. If 1 is having the maximum bond order, then 1 is most stable and the metal metal bond is strongest, bond strength is strongest. It means that structure number 1 is having the shortest bond length. I hope this problem is clear to all of you. Now let us move on to the next problem. Identify the bond order of the following complex. They're just asking for the bond order. Okay? Now let us solve the first one. SO4 whole 4 2 minus. So it is very easy. So osmium जो है, let us consider the oxidation state of osmium to be x, दोनों के लिए 2x. SO4 is having the valency, you know, H2SO4 में SO4 is having the valency -2. It is very easy, you know this. So therefore यहाँ पे क्या हो गया, 2x is equal to +6. इसीलिए एक का हो गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो दोनों जो ऑस्मियम है, एक्चुअली ऑस्मियम का अगर वो न्यूट्रल होता उसका टोटल इलेक्ट्रॉन 16 होना चाहिए था, लेकिन सिंस इट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दोनों के लिए ये 6 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो ये हो जाए 10. तो इसका अगर आप बैरी सेंटर ड्रॉ कर लेते हो तो यहाँ पे जो है सिग्मा इज द मोस्ट स्टेबल, देन यू हैव दिस. तो जल्दी से हम इसका एमो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, एंड फिर हम इसे 10 फिलअप कर देते हैं. तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. क्लियर? सो फिर इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएंगे, देयरफॉर द बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 8 - 2 by 2. So this is equal to 6 by 2. The bond order is 3. So this is the answer. अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मुझे इसे थोड़ा जल्दी करना है, हम देख रहे हैं दैट the bonding molecule or total bonding molecule orbital can accommodate maximum up to 8 electrons. इससे बाद जितना भी होगा वो एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे. तो एवरी टाइम आप बिना ड्रॉ किए भी आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. कैसे कर सकते हो मैं आप लोगों को बताती हूँ. Now the next example. Now this is very important. Before we proceed, it is very important for us to understand what is the oxidation of this new ligand. This is HPO3. तो ये मैं आप लोगों को एक बता देती हूँ. The structure of phosphorus is pentavalent, है ना. तो कोई भी फॉस्फोरस जो है इसका जो स्ट्रक्चर है ये फिक्स्ड होता है, ठीक है. एंड सिंस इट इज, ध्यान से देखो, HPO3, तो एक कैसे इसका स्ट्रक्चर कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं इन फ्यूचर डेफिनेटली एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी. सो दिस इज द फिक्स स्ट्रक्चर. ऑलरेडी एक ऑक्सीजन यहाँ पे हमने ले लिया है. सो टोटल कितना है, 3. तो हम यहाँ पे 1 2 दे देंगे, ठीक है. एंड नेक्स्ट
एक हाइड्रोजन है तो उसे हम यहाँ पे फिल अप कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज हैविंग द चार्ज -1 एंड दिस इज -1, तो ओवरऑल इसका जो चार्ज है ये हो गया आपका -2 चार्ज है। सो टोटल रेनियम, अगेन यू कंसिडर the oxidation state of rhenium to be x, दोनों का 2x है, plus you are having 4. This new ligand is having oxidation state of -2. तो I repeat, तो ये जो आपका बेसिक स्केलेटल स्ट्रक्चर है फिक्स्ड है, ठीक है। फॉस्फोरस इज पेंटावेलेंट, आपने तुरंत ये स्ट्रक्चर ले दी, ये फिक्स्ड है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया हमने, तो रिमेनिंग कितना हो गया 2, ओ फॉर्म में लिखा है, तो बाकी जो है इसे हमने यहाँ पे डाल दिया, तो उसका जो चार्ज है इसका है -1 टोटल -2, clear? So this is equal to +1 and therefore 2x is equal to 9. So I already informed you, तो बॉन्ड ऑर्डर हम जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2। सो बॉन्ड ऑर्डर जो है ये मैक्सिमम 8 ऑक्यूपाई कर सकते हैं, एक्स्ट्रा डेफिनेटली एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, डिवाइड बाई 2, दिस इज 7/2 एंड दिस इज इक्वल टू सॉरी स्टूडेंट्स, आई एम वेरी सॉरी, अभी बॉन्ड ऑर्डर नहीं, ये तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया है, आई एम वेरी सॉरी। सो दिस इज योर ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिल गया। तो जो एक रेनियम है, तो एक रेनियम जो है इसका जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना होना चाहिए, एक रेनियम का टोटल इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए 14। सो 2 रेनियम जो है यहाँ पे द गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, अगर आप n+ लिखते हो तो दिस इज इक्वल टू टोटल 14 होना चाहिए -9। सो 14 - 9 इज इक्वल टू 5। तो इसका एमओ डायग्राम अगर हम करते हैं, total 5 electrons, 1 2 3 4 5. So therefore bond order कितना होगा, this is number of electrons in the bonding minus antibonding divided by 2, so this is equal to 2.5. so this is the answer, ठीक है। last example but not the least, let us do it, and that is the last example of this video, and the last example is this. So before we proceed, it is very important for us to understand the charge of the new ligand. Again I repeat, तो ये है HPO4. So phosphorus is pentavalent. So in this case कोई भी phosphoric acid या phosphorus acid कोई भी आप draw करो, this is the fixed structure. So already यहाँ पे एक हो गया, remaining 4 था, तो remaining कितना हो जाएंगे 3। एक हाइड्रोजन किसी में भी बिठा दो, और ये जो O फॉर्म में है obviously इसका -1 चार्ज हो जाएंगे। so this is also having -2 charge, ठीक है। so again let us do this. so you are having 4 of this ligand and then you have the charge -2 which is equal to 0, therefore 2x कितना हो जाएंगे, 2x is equal to 8. so जो 2 osmium है in the given complex, 2 osmium is having actually plus for oxidation state. so अगर वो न्यूट्रल होते तो उसका ओवरऑल टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स होते, लेकिन इसका दोनों का 8 इलेक्ट्रॉन्स कम है, so this is equal to 8. now see students, ये ऑलरेडी मैंने बहुत बार आप लोगों को दिखाया that number of electrons in the bonding molecular orbital can accommodate maximum up to 8 electrons. उससे ज़्यादा जो एंटी बॉन्डिंग में चले जाते हैं, so यहाँ पे 8 बॉन्डिंग में रहेंगे, एंटी बॉन्डिंग में 0 हो जाएंगे, डिवाइड बाई 2, so इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएंगे 4. so 4 is the answer. So I hope you like this video. If you like it, do press the like button. It actually encourages us a lot. So thank you for watching our video. Thank you.